Hello students, good morning. Let's start today's revision class. Dear student, today we will revise chapter 19. We will revise all lesson from chapter 19. Okay, so let's see the chapter. Dear student, first of all we will discuss about word bank of this lesson. And the first word bank is preamble. Preamble का मतलब क्या होता है बेटा? An introduction as to a law. मतलब कानून के दृष्टिकोण से जो है एक इंट्रोडक्शन है। एक कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है बेटा? इंट्रोडक्शन है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन किन चीज़ों को कवर करता है। नेक्स्ट है बेटा सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का मतलब होता है टू स्टॉप और पुट ऑफ फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सस्पेंडेड का मतलब होता है थोड़े समय के लिए किसी चीज़ को रोक देना। सस्पेंडेड का मतलब क्या होता है बेटा? थोड़े समय के लिए किसी चीज़ को स्टॉप कर देना या रोक देना। Next is national emergency, the state or country being under serious threat. National emergency का मतलब क्या है बेटा? The state or country being under serious threat. मतलब चाहे वो स्टेट हो या कंट्री हो, वो अगर प्रॉब्लम में होती है या वहाँ पे सब कुछ सही से नहीं चल रहा होता है, if there is any problem and everything is not going on properly, so this is called the condition of national or state emergency. Next है बेटा match the following. In match the following I have written here side by side correct answer and you have to see the answer that I have done for you. So you can see here, first of all, Indian Constitution dash. Indian Constitution का बेटा किससे मैच होगा? Written. That will be answer C. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेटा जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज एन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स. बेटा फंडामेंटल राइट्स इज द राइट ऑफ द सिटीजन. जो फंडामेंटल राइट है बेटा वो किसका राइट है? सिटीजन का, लोगों का. नेक्स्ट है बेटा फंडामेंटल ड्यूटीज. ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन. जो फंडामेंटल ड्यूटी है बेटा आई हैड टोल्ड यू अबाउट राइट्स एंड ड्यूटी. When there I had told there that both are the good friend and both moves together. दोनों ही एक अच्छे मित्र हैं बेटा और एक साथ जहाँ भी ड्यूटी है वहाँ राइट है और जहाँ राइट है वहाँ पे ड्यूटी है. तो बेटा अगर हम देखें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसके लिए है? ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन. जिस तरीके से बेटा फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन है, इन द सेम वे फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर द ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स. नेक्स्ट इज प्रियम्बल. प्रियम्बल क्या है बेटा? इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन है. प्रियम्बल में वो सारी चीज़ें हैं जो कि मेन हैं और हमारे संविधान में जिनको शामिल किया गया है. दीज ऑल हियर. नेक्स्ट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मीन्स गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट. गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के लिए एक दिशा निर्देश है बेटा. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज द गाइडलाइन फॉर द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट. बेटा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट हैव टू मेक द लॉ फॉर अस एंड at that time when they are going to make law for us, there is a duty of, it is the duty of state government and central government to follow the directive principle of state policy. Beta directive principle of state policy is the direction for the government, so keep in mind. So beta directive principle of state policy, that is the guidelines for the government. ये गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस है बेटा. बिकॉज आवर कंट्री इंडिया इज़ अ वेलफेयर नेशन. बेटा हमारा बेटा जो देश है, कंट्री है जो हमारी इंडिया, वो कैसा राष्ट्र है बेटा? वेलफेयर नेशन है. यहाँ पे लोगों के कल्याण को सर्वोपरि माना गया है और सबसे ज़्यादा ध्यान उसी पे दिया जाता है. तो बेटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट, यहाँ पे अगर हम बात करें तो गाइडलाइन है गवर्नमेंट के लिए. टिक द करेक्ट आंसर. द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द प्रियम्बल. इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द प्रियम्बल. बेटा ये इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको कि हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रियम्बल के नाम से.
So keep in mind, I have written here the correct answer. I have not given here the 4 option because you have to learn by this. So introduction to the constitution is known as the preamble. Next is the Constitution of India came into effect on which date? 26 January 1950. Next is beta, every Indian citizen enjoys certain basic rights called the fundamental rights. बेटा बहुत सारे हमारे इंडियन सिटीजन हैं जो कि इन सर्टेन राइट्स को एंजॉय करते हैं और उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स. नेक्स्ट है द गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन आर कॉल्ड. बेटा जो गाइडलाइंस होती हैं जो कि लोगों के भलाई के लिए होती हैं, लोगों के कल्याण के लिए होती हैं, और ये गाइडलाइन किसके द्वारा दिया जाता है? गवर्नमेंट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. और ये गाइडलाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. नेक्स्ट इज बेटा, इफ द गवर्नमेंट डिनाइज अ person his or her fundamental rights, the person can appeal to where? Court of law. बेटा court of law the person can move if his or her fundamental rights denied by the government or anybody. The person can move directly to the court of law, that is High Court and Supreme Court. My dear student, in other cases, in other appeal, first of all we have to go to the lower court, and when the case will be decided, then we will move towards the high court, and when in the high court case will decide, then after we can move to Supreme Court. But in the condition of fundamental rights, we can move directly towards Supreme Court or High Court. Beta, we can move directly towards the Supreme Court by Article 32, and we can move directly High Court by Article 226. So these things that you have to keep in mind and do the proper revision of all lesson. So my dear student, enjoy your day. Thank you and have a nice day.